Okay, so hi guys, how's everyone? Welcome to today's class. Today we're beginning with a new chapter, which is called surface area and volume. It's mainly of cubes and cuboid. So what all that is now we'll be seeing. Okay, so get ready now. Let's begin. Okay, chalo, let's start. Okay, मेरा screen दिख रहा है? Yes, sir. Okay, chalo, nice. So volume and surface area. Okay. And what is it going to be? It's going to be on two shapes. Now, what the shapes are, let's have a look. Okay, so the first shape is a cube. Okay, C-U-B-E cube. ठीक है? Cube तुम लोगों ने देखा ही होगा ना ऐसे ऐसा Rubik's cube. This is called a Rubik's cube. This whole thing, this whole structure is a Yes. cube. Okay. Then this is just another example. Like ice ऐसे होता है shape basically a cube. नहीं तो आइस का भी क्यूब आता है मतलब और शुगर का भी क्यूब आता है तो ये क्यूब शेप तो तुम लोग ने बहुत बार ऐसे देखा होगा लाइक ठीक है so this is what a cuboidal shape cube shape looks like. Okay, now next is this shape, this is called a cuboid. Okay, now we will be learning about them in detail. So roughly ऐसा shape है like ये शेप है देख लो एक बार क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है क्यूब एकदम फुली सिमेट्रिकल एवरीथिंग ऑल लेंथ्स आर इक्वल अगर ये एल है अगर ये साइड का लेंथ एल है तो ये भी एल एल एवरीथिंग इज एल ओके बट हियर there are three different dimensions. One is the length of the cuboid, then the other thing is called the width या तो the breadth. Width मतलब जो thickness, how thick it is, and the third thing is called the height. Height मतलब क्या height है उसकी क्या ऊंचाई है basically. Okay, so that's the height, and this is called a cuboid. Okay, this shape. So in this chapter basically Yes, we'll be sir. learning as such in detail about these shapes only. Okay, so okay, firstly let me teach you okay how to draw a cube. ये मतलब ऐसे अच्छा it's like a good way to draw it. So how do you draw this cube का shape ये कैसे आता है? How do you draw such a shape? So see what you're supposed to do is you take you have to basically take take draw one square like this. ठीक है ऐसे एक square draw करो और फिर क्या करो एक और now see what do you do? Now take one more square from here. Okay, और फिर क्या करना है इन दोनों को बस ऐसे इन साइड्स को जॉइन करो. So see this now this is a cube shape. Okay, जो भी अभी whoever's watching this try to draw this अपने बुक में ये draw करो. How did I say how to draw this? पहले एक square draw करो फिर एक और square draw करो ऐसे ही diagonally उसके ऊपर और फिर ये edges को join करो. So this gives you the shape of a cube. Okay, ठीक है ये draw हुआ बोलो ऐसा आर्यन tell Yes. me you were able to draw it ऐसे ऐसा ही दिख रहा है ना proper Yes, sir. cube का shape. So this is just a way to draw a cube. Okay. Good afternoon, And sir. oh, hi Manasvi. Yeah. Okay, so we started with this volume chapter. Okay, volume and surface area. तो अब तक I just told कि what is a cube and cuboid क्या होता है और how to draw a cube. And अभी cuboid को भी सीखेंगे. How do we draw a cuboid? तो अभी क्यूब के लिए क्या ड्रॉ करना था? ड्रॉ देखो यहाँ पे you have to draw two squares and join. ऐसे करना है. क्यूबॉइड के लिए क्या करना है? ड्रॉ टू rectangles and join the edges same way. तो देखते हैं let's see how it looks. So okay, let's start. This is one rectangle, right? Now I'll take another rectangle. Okay, this is another rectangle right here. And क्या करना मैंने बोला join these edges. तो ये मतलब it's okay ऐसे अगर प्रॉपर एकदम परफेक्ट शेप नहीं बट इट शुड लुक समवॉट लाइक दिस. ओके, सो ड्रॉ टू रेक्टेंगल्स एंड जॉइन इट. ओके, ट्राई डूइंग दिस. आई विल जस्ट बी बैक. ओके, ड्रॉ दिस फास्ट.
ओके ये सबसे ड्रॉ हो गया, मैसेज मी यस इफ यू आर डन विद ड्राइंग इट। अगर नहीं हुआ तो बोलो, ओके आई डू इट अगेन एंड शो। ठीक है, ओके सो दिस वाज जस्ट द बेसिक, मतलब ये तो है भी नहीं चैप्टर। ओके नाउ वील एक्चुअली बिगिन विद दिस, व्हाट अ क्यूबॉइड इज, व्हाट अ क्यूब इज। ठीक है, सो ओके लेट्स बिगिन। सो इन अ क्यूब, देखो मैंने क्या बोला था कि व्हाट यू हैव टू ड्रॉ टू स्क्वायर्स, स्क्वायर्स है ना। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर, दैट ऑल साइड्स आर इक्वल राइट ऑफ अ स्क्वायर। सो दैट मींस इफ इसका लेंथ l है, इसका भी l होगा, इसका भी l, ऑल साइड्स का लेंथ l है। ठीक है, दैट्स लाइक द प्रॉपर्टी। ओके ये हमेशा ट्रू है फॉर अ क्यूब। ओके सो ऑल साइड्स का लेंथ इज l, ओके दैट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग। एंड नाउ इफ वी लुक एट अ क्यूबॉइड, ऑल साइड्स का लेंथ सेम नहीं है। ये या ये साइड का लेंथ कुछ है, फिर यहाँ का कुछ और है, और ये भी कुछ और है। सो व्हाट डिड आई से इन दैट डायग्राम, दे आर डिनोटेड एज डिफरेंट थिंग। देखो ये मैं जो बोल रहा था, सो नाउ व्हाट आर दे कॉल्ड, सो दिस इज कॉल्ड द लेंथ, जो ऐसे लंब, ऐसे हाउ लॉन्ग इट इज बेसिकली लेंथ। दिस थिंग ऑन द साइड इज कॉल्ड द ब्रेथ। ठीक है, BREADTH, ब्रेथ। ये तो तुमने किया होगा, रेक्टेंगल में भी लेंथ एंड ब्रेथ होता है ना, तो एरिया इज L into B। तो सेम वे फॉर क्यूबॉइड अभी वैसे ही होता है, बट एक एक्स्ट्रा हो जाता है हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। एंड क्यूबॉइडल तुम लोग को बहुत शेप्स मिलेंगे ऐसे। इफ यू सी दिस आल्सो, दिस इज लाइक अ क्यूबॉइडल काइंड ऑफ अ शेप, अगर ये एजेस प्रॉपर है तो ऐसे क्यूबॉइडल शेप। एंड क्यूब के भी ऐसे देखो, somewhat if you look at this shape it looks kind of like a cube। if you if all the lengths, मतलब जो dimensions है they are all equal। okay so मतलब समझ गए ना अभी, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया कि व्हाट इज अ क्यूब, क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है। ओके या, सो नाउ व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट दिस, अभी नाउ वी नीड टू see what this chapter is about basically, and that is volume and surface area। so now let's begin with what the main topic is, volume। वॉल्यूम क्या होता है, what exactly is volume, so now we are going to discuss this। okay so suppose I take this cube shape का एक ऐसे, let me draw it again। okay ये क्यूब शेप का एक बॉक्स है, ठीक है, और ये जो बॉक्स है ना ये ऊपर से खुला है, दिस इज ओपन फ्रॉम द टॉप, और बाकी सब साइड से बंद है। ठीक है, सो व्हाट आई से, इट्स ओपन फ्रॉम दिस पार्ट and then it's closed from all other edges। okay so now what do I say, I want to fill water in this cubic जो box है। okay I want to fill water, तो क्या होगा, how much, suppose now um yeah, so suppose I'm filling something like water or something, some liquid in this, so जो आएगा water वो एकदम भर जाएगा ना पूरा। So the amount of space that this water will cover, that entire thing, उस पूरे को ना हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्या होता है, मतलब अगर सपोज वी हैव टू फिल वाटर, तो कितना भरेगा, द एंटायर वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज गोइंग टू गेट फिल्ड विद वाटर। ओके सो दैट इज व्हाट यू कॉल वॉल्यूम ऑफ इट। ओके अभी इसका फॉर्मूला वो सब आएगा, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट, just for an example कि अगर पानी भरना है तो कितना पानी भरेगा, how much water can be filled in this cube, that is called the volume of the cube। okay so now if we go to see, देखो again I'll draw it, two squares। okay ये square है। okay and now what did I say, सबका लेंथ l है, ठीक है, l l l l l। तो अगर इफ वी जस्ट सी वन स्क्वायर, ओके वन स्क्वायर ही होता है, सिर्फ एक स्क्वायर होता है, तो इसका लेंथ l, इसका लेंथ l, तो इसका एरिया क्या हो गया, l into l ना, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज व्हाट, साइड इनटू साइड, so this can be called as l square, l into l, side into side। तो अभी क्या है, what is this cube, cube basically it's like a square, but ये स्क्वायर ऐसे एक और आ गया ना, and how much is the distance between these both, this is also another l, so now you do l square वापस into l। so now this is how we basically come up with the formula, therefore volume, volume of a cube is equal to l cube। ये क्या लिखा है, l cube, l
क्यूब मतलब एल का जो एल को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब एल इंटू एल इंटू एल, ठीक है, ये समझे, ये लिख लो, ओके, राइट दिस फॉर्मूला फास्ट. दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, एल इंटू एल इंटू एल. And what did I say this volume is? It's the space which this water inside it will occupy अगर हम लोग भर लेंगे. Okay, so that is called the volume of the cube. Okay, now next, okay, now next we are going to see for same thing volume for a cuboid. ठीक है, cuboid का shape दिखा देता हूँ वापस, ऐसे दिखता है. This is a cuboid. This is all cuboids. Okay, so now if this is, I'm drawing a cuboid अभी, ठीक है. Okay, Trishna, you're late, okay, but we started with this new chapter today. और ये cuboid का अभी shape है basically, तो just like अभी try to understand अभी, ठीक है. So what is going on? So this is a cuboid and क्या ढूंढना है अभी हम लोग को, इसका volume ढूंढना है. And what did I say volume is? अगर if I want to fill water in this, how much space will that occupy? तो if this water कितना भर जाएगा, how much will it occupy? पूरा, okay. So now how do we find this? That's basically the ये chapter का point. Okay, so what did I say? This is L, this is breadth, and this पूरा ऊपर से नीचे thing is called height. So if we look just at a rectangle, ठीक है, just at one rectangle, उसका area का formula क्या आता है? Area of a rectangle is equal to L into B. So this is also technically one rectangle. ये जो नीचे का है one rectangle, and एक और rectangle ऊपर आ गया है ना, so that is separated by H. So then volume became what? Volume of this becomes L into B into this additional जो आता है वो H हो गया, height. So this is the volume of a cuboid. तो ये भी फॉर्मूला लिख लो, volume of a cuboid is equal to L into B into H. एंड इसका यूनिट क्या होगा? सपोज इट्स गिवन इन सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. ऊपर भी एक ऐड कर लो यहाँ पे, दैट वॉल्यूम इज एल इंटू एन सेंटीमीटर क्यूब. व्हाई क्यूब? बिकॉज 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. सपोज द लेंथ ऑफ, सपोज फॉर अ क्यूब द लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 5 into 5, ओके. So this becomes, if you multiply and check, it's 125 centimeter cube. Why cube? Because 3 times you're multiplying. So centimeter into centimeter into centimeter, which is centimeter cube. Okay. So ठीक है, ये अभी कॉपी कर लो जल्दी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का भी. एंड okay, then we go a little ahead. Okay, यहाँ तक हो गया everyone? If you copied and understood, just message yes. So then I'll go ahead now. Okay, yeah. हाँ ठीक है, अभी रुका ही. ये रेक्टेंगल का था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना. दिस इज फॉर रेक्टेंगल एंड दिस इज फॉर द क्यूबॉइड. हो गया क्या सबका? once everyone is done, message me, okay, then I'll continue. जल्दी कॉपी करो. Okay, चलो. So now before we do go ahead with the questions, थोड़े we'll learn some basic conversions, ठीक है. So let's see, ये important है बहुत ये चैप्टर में. बेसिक कन्वर्जन्स क्या होता है अभी बताऊंगा. बेसिक कन्वर्जन्स, तो ओके, यहाँ ये तो सबको पता होगा ना, दैट
in 1 meter there is how many centimeters? 100 centimeters. 1 meter में 100 centimeters होता है, इतना पता है सबको? Yes, sir. Okay, चलो. And then if we see 1 centimeter, उसमें कितने मिलीमीटर होते हैं? तो इफ एवरीवन हैज अ, ये जो 15 सेंटीमीटर का रूलर है ना सबके पास, तो इफ यू सी इट, इफ यू जस्ट लुक एट द, जो ऊपर का होता है ना, जो डिमार्केशन जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 15 लिखा है, तो इफ यू जस्ट सी बिटवीन लाइक 11 एंड 12 कितने लाइंस है, बिटवीन 11 सेंटीमीटर का मार्क एंड 12 सेंटीमीटर का मार्क, हाउ मेनी लाइंस आर देयर? सो यू विल सी 10 ऐसे स्मॉल लाइंस. So that is the unit of millimeter, 10 millimeters. Okay, उसको बोलते हैं millimeter. That one जो small जो होता है छोटा सा. Okay, तो उसको बोलते हैं millimeter. So this is also one more conversion. Okay, so 1 meter is 100 centimeters and 1 centimeter is 10 millimeters. Okay, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं. Okay, एंड ये भी है बट ये चैप्टर में इतना यूजफुल नहीं है. बट 1 किलोमीटर में देर आर 1000 मीटर्स. इतना भी पता होगा तुमको कि 1 किलोमीटर में ऐसे 1000 मीटर आते हैं. ये इम्पोर्टेंट है मतलब, बट ये चैप्टर में इतना नहीं, आगे के चैप्टर्स में विल कम मोर. ओके, सो चलो. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन डू विद दिस. सो सपोज नाउ आई टेल यू दैट 1 मीटर में देर आर 100 सेंटीमीटर. सो 1 मीटर स्क्वायर में हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? तो अभी कैसे करेंगे इसको? लेट्स सी. सो 1 मीटर में देयर आर 100 सेंटीमीटर. सो 1 मीटर स्क्वायर इज हाउ मच? 1 मीटर इंटू 1 मीटर है ना, मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर. ओके, सो मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर. सो 1 मीटर में कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर. और ये भी 100 आ गया. ओके सॉरी, 1 मीटर स्क्वायर में इज हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैं भूल गया, तो ये लिख लो. So this is 1 meter gives 100 centimeter and another 1 meter gives 100. So to find this whole total conversion, therefore 1 meter square is equal to 100 centimeters multiplied by 100 centimeter. तो ये कितने हो गए zeros? 1 2 3 4 है ना, ये 1 2 3 4 zeros है, तो 10,000 centimeter square. 1 मीटर स्क्वायर में देर आर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये सब लोग को समझा कि ये क्या किया मैंने? I was seeing, I use the relation की, okay, got it now, चलो. So I use the relation that 1 meter में there are 100 centimeters and based on that, उसके basis पे मतलब मैंने ये भी निकाला कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर. सेम वे दिस इज कॉल्ड मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर. ठीक है, बुक में जो भी लिखा है उस मतलब वो कंफ्यूज मत होना, बोथ मीन द सेम थिंग. ओके, स्क्वायर मीटर्स या मीटर स्क्वायर एक ही बात है. ओके, सो ओके, ये कॉपी कर लो, फिर थोड़ा देखते हैं. नाउ लेट्स सी वन मोर कन्वर्जन दैट हम लोग ने पहले ये देखा 1 मीटर स्क्वायर में देर आर हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ लेट्स सी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हाउ मेनी, क्या हाउ मेनी व्हाट? मिलीमीटर स्क्वायर. सो लेट्स सी. सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज हाउ मच? दैट्स 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है ना, दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड 1 सेंटीमीटर में हाउ मेनी मिलीमीटर आता है? वी जस्ट देयर आर 10 मिलीमीटर्स हियर एंड अनदर 10 मिलीमीटर्स हियर. सो देयरफॉर वी कैन ऐसे ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर is equal to 10 millimeters into 10 millimeters. So this is nothing but 1 centimeter square is equal to, now how many zeros? 1 2. So 100 millimeter square. ठीक है, ये भी रिलेशन लिख लो. ओके, या वेरी गुड. तो ये भी तुम लोग समझ गए होंगे अभी दैट हाउ डू कन्वर्ट ऐसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मिलीमीटर स्क्वायर. Okay, so these were conversions जो तुम लोग को पता थे. Okay, अभी now we'll do some more important ones. तो यहाँ पे ऐसे स्टार डाल के लिख लो. सो यू नो इतना भी पता होगा कि 1 लीटर में 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर्स. वो देखा होगा ना, बिस्लरी का छोटा सा बॉटल, दैट इज लाइक आई डोंट नो 100 ml का बॉटल होता है ना, ऐसे बोलते हैं 1
1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये देखा होगा तुम लोग ने कि या तो वो पेप्सी या कोक का 1 लीटर का 2 लीटर का बॉटल आता है, या तो छोटे वाले आते हैं ऑफ 200 मिलीलीटर या 500 मिलीलीटर। तो ये बस यूनिट है। सो दिस इज द कन्वर्जन दैट 1 लीटर में देना 1000 मिलीलीटर। और एक और कन्वर्जन है दैट इज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी। सीसी क्या है? सीसी का फुल फॉर्म इज सीसी इज इक्वल टू क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्यूबिक क्या होता है? क्यूब मतलब क्या? समथिंग मल्टीप्लाई थ्राइस ना, क्यूब मतलब रेज टू 3। तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी लिख लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी ओके नाउ इफ आई कॉल दिस रिलेशन 1 एंड आई कॉल दिस रिलेशन नंबर 2, तो ये देख सकते हैं ना कि पहले वाले में क्या था, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, और दूसरे में क्या था, 1 लीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें से व्हाट कैन वी सी कि ये सेंटीमीटर क्यूब को अभी हम लोग सीसी बोलेंगे, ठीक है, सीसी। सो फ्रॉम दिस इफ आई रिलेटेड दैट 1000 मिलीलीटर्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 लीटर, 1 लीटर है ना, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 सीसी। तो अभी अभी हम लोग ये दोनों को रिलेट करेंगे। सो कैन वी जस्ट से दैट कि 1000 ml इक्वल्स टू 1000 सीसी। So if 1000 ml equals to 1000 cc, so therefore we can also say that 1 milliliter equals to 1 cubic centimeter। ये भी बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो तुम लोग को याद करना है, दैट 1 मिलीलीटर में देयर इज 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 cc, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये थोड़ा कॉपी कर लो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आई एम गिविंग 1 मिनट, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। एंड इफ यू आर डन देन मैसेज यस, ओके। तो आज ऑल्सो कम टू नो कि तुम लोग का हो गया। एंड नो रश, ठीक है। ये जो भी मैंने ऐसे बॉक्स में लिखा है ना, ऐसे बॉक्स डाल के जैसे जो लिखा है, मतलब जिसके बाजू में स्टार है, तो दैट्स इम्पोर्टेंट, ओके। तो वो ध्यान से ऐसे लिखो। ओके या चलो डन। सो ओके, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। अभी ये कन्वर्जन्स पे नहीं है अभी के लिए क्वेश्चंस। फर्स्ट वील डू द जो फॉर्मूला था उस पे, ठीक है। सो ये क्यूब का एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ। क्यूब का क्या था फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, ओके लेट मी जस्ट राइट इट डाउन अगेन। ये लिख लो वापस, ओके। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, एल क्यूब। मतलब ये एल क्यूब क्या होता है, एल इंटू एल इंटू एल, ठीक है। एंड वन मोर फॉर्मूला विच वाज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज व्हाट, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब था इसका यूनिट, और मीटर क्यूब जो भी दिया है, और इसका भी सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, ओके। सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज व्हिच वी डिड, एंड उसके बाद जो कन्वर्जन भी किए वो भी थे, बट वो तो मतलब देख लो एक बार, ठीक है। So yeah, let's start. Question number one. Okay. क्या है क्वेश्चन? If the side length of a cube is 4 centimeters, find the volume of that cube. तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं क्यूब को। दिस इज अ क्यूब
ठीक है, ऐसे थोड़ा ओके। एंड क्या लिखा है, द साइड लेंथ, एक साइड का लेंथ इज हाउ मच, 4 सेंटीमीटर्स। तो क्या ढूंढना है, वॉल्यूम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज व्हाट, एल का, एल रेस टू 3, मतलब L सो दिस इज हाउ मच, एल का वैल्यू क्या है, 4 ना, सो 4 into 4 into 4, so 4 fours are 16 and then 16 fours are, you do it and answer will come out to be 64, and unit what did I say, देखो क्या दिया है, centimeter, so then what will this unit become, centimeter cube, okay, so हो गया, तो therefore volume of the cube is 64 centimeter cube। ये सब लोग को समझा, then we'll go ahead, फिर मैं तुम लोग को थोड़े क्वेश्चन दे सकता हूँ on this, message me if you understood, yes message करो अगर ये समझे। ओके या ठीक है, कॉपी तो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड ये डायग्राम भी अगर तुम लोग को ड्रॉ करना है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, देन इट्स लाइक गुड ओनली, अच्छा ही है। और स्कूल में भी ड्रॉ किया, देन द टीचर विल आल्सो बी, मतलब उनको भी लगेगा कि ओके तुमको पता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ, here's the question, if the side length of a cube is 6 centimeters, find its volume। वैसे ही है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ही है, बहुत बेसिक है, तो जल्दी सॉल्व करके बताओ मेरे को उसका आंसर, मैसेज करो, मैसेज में द आंसर। And unit भी मत भूलना, don't forget the unit, the unit here will be centimeter cube, because the unit over there is 6 centimeters। अगर मीटर होता है तो मीटर क्यूब होता है उसका थिंग, तो अभी सेंटीमीटर है तो यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ओके लेट्स सी। ओके वेरी गुड Manasvi, the answer is 216। so let's see, वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम का फॉर्मूला इज L क्यूब, so L into L है ना, so 6 into 6 into 6 which is nothing but 216 centimeter cube, that is the volume of this cube if the side length is 6 centimeters। okay, तो cube का भी हो गया volume। now I'll give you a few questions on cuboid। and height is how much, 6 centimeters, find its volume, ठीक है। so read the question once, write it, if length of your cuboid is 8 centimeters, breadth is 4 and height is 6, find the volume of the cuboid। okay, so let's draw this cuboid, ऐसा rectangle 1, rectangle 2, okay, then you join all this, और एक बार join किया, then what did I say, this was the length, this is the breadth and ऊपर से नीचे is the height। तो वो दिया है लेंथ, read the question, सब क्वेश्चन में दिया है, लेंथ ऑफ अ cuboid is 8 centimeters, breadth is 4 centimeters and height is how much, 6 centimeters। तो वॉल्यूम ऑफ अ cuboid का क्या है फॉर्मूला,
volume is equal to L into B into H. So 8 into 6 into 4 है ना, 8 into 4 into 6, ठीक है. So then you just multiply this and उसके उससे आंसर आ जाएगा. हाँ, what do you say? क्या आंसर आया? 192. हाँ, 192. Very good. Perfect. So 192 centimeter cube should be the answer of this cuboid. Very good. Don't forget the unit, ठीक है, वो बहुत important होता है. तो ये भी easy था. चलो ना एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये जल्दी करो. If length find volume of cuboid. Okay, so ये भी जल्दी कर लो. बहुत बेसिक है, जिस फॉर्मूला यूज करना है, मल्टीप्लाई करना है, एवरीथिंग. ओके चलो. ओके लेट्स सी. ओके चलो लेट्स चेक इफ द आंसर्स करेक्ट. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, है ना, सब मल्टीप्लाई करना है. सो 5 into 13 into 7, and if you multiply this and the multiplication is correct, the answer should come out to be 455 centimeter cube. So okay, whoever messaged me this, the answer is correct. Okay, very good. So ये भी हो गया. Okay, so अभी तक हम आई होप कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है फॉर क्यूब एंड क्यूबॉइड वो तुम लोग को एकदम क्लियर हो गया. ओके, सो हाउ डू यू फाइंड वॉल्यूम नाउ? यू आर लाइक pretty good at it. Okay, काफी प्रैक्टिस भी हो गई है. Okay, now let's do some more questions. Okay, now this is going to be a little different type, मतलब अभी थोड़ा आगे के टाइप का है. ओके हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम. इफ यू जॉइन लेट इट्स ओके. अभी चलेगा. जो भी मैं लिख रहा हूँ वो कॉपी कर लो, ठीक है, और बाकी का तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो. ठीक है, तो चलेगा. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. फाइंड how many liters of water will a cube cuboidal fish tank contain if its length breadth and height are 100 centimeter, 40 centimeter and 50 centimeters respectively. ठीक है, तो लेंथ भी दिया है, ब्रेथ भी दिया है, हाइट भी दिया है, और क्या ढूंढना है? वॉल्यूम ऑफ अ फिश टैंक. तो अभी फिश टैंक क्या है? बेसिकली इट्स लाइक अ टैंक जिसमें ऐसे जो फिश तैर रहे होते हैं, ठीक है, एनी टाइप ऑफ फिश, गोल्ड फिश जो भी, ठीक है. सो दैट इज अ फिश टैंक. सो एक है फिश टैंक, और लेट्स ड्रॉ इट रफली. ओके, ये हमारा फिश टैंक हो गया. एंड क्या दिया है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 100, 40, 50 रिस्पेक्टिवली. तो उसका क्या मतलब है कि लेंथ इज ओके, लेंथ, breadth, height. So now length is 100 centimeter, breadth is 40 centimeter, height is 50 centimeter. तो पहले तो क्या निकालना है? वॉल्यूम. So let's see. Volume is equal to L into B into H, है ना? So that becomes 100 into 40 into 50. So how much does this come out to be? Let's see. 20,000. Okay, very good. So let's check if that's correct. 20 and 1, 2, 3, 4. Is it? ये तो 2 लाख आ रहा है ना, 20,000 नहीं, 2 लाख. एक 5 जीरो है देखो. हाउ डू डू सच मल्टीप्लिकेशन? लेट मी शो यू अ मेथड, ठीक है.
सो क्या करना है, 100 × 40 × 50, राइट? तो पहले तो क्या करो, 4 × 5 करो, 4 × 5 is 20, है ना, 20। now how many zeros are left? 1 0 2 3 and 4। तो 1 2 3 and 4, बस you write that। and now this is how much, 2 lakh। so ये 2 लाख हो गया, ठीक है। so 2 lakh, now let's see, wait, it's not over the question। 2 lakh centimeter cube is the volume, but question में क्या पूछा है, find how many liters of water will fit। मतलब अभी सेंटीमीटर क्यूब दिया तो वॉल्यूम मतलब तो मिल गया, बट वी नीड टू फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। तो लीटर्स का क्या फॉर्मूला था, कन्वर्जन अभी काम आएगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी, 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 1 लीटर होता है। I'll repeat that, for every 1000 centimeter cube there's 1 liter। तो suppose it was 2000 centimeter, ये हम लोग को 2 लाख आया, suppose 2000 आता तो that means 2 liters। so now therefore volume in liters करने के लिए क्या करना है, we divided by 1000, so 2 lakh upon 1000। okay, why? Because we need the answer liter, and the conversion is what, 1 centimeter cube is 1000 liter। So now 0 0 0, 3 zeros cut here, 1 2 3, and 3 zeros cut from up, so what is left, 200, 200, 200 liters। so हो गया, therefore volume comes out to be 200 liters। so the volume of the fish tank is 200 liters। okay, तो ये कन्वर्जन करने के लिए एक और मेथड था दैट यू हैव डन इन पहले आल्सो, इट्स कॉल्ड यूनिटरी मेथड। तो आई विल शो यू थ्रू दैट आल्सो हाउ डू यू फाइंड दिस। लेट्स हैव अ लुक, यूनिटरी मेथड। ओके, सो व्हाट इज द कन्वर्जन, 1 लीटर is what, 1000 centimeter cube। so x number of liters वो हम लोग को ढूंढना है, is how much, 2 lakh सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल, x लीटर इज 2 लाख। तो अभी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर 2 lakh is equal to 1000 multiplied by x, है ना। so what, therefore x is equal to 2 lakh upon 1000। तो 0 0 0, 3 zeros cut, 0 0 0, so what is left in the end, 200 only। तो देखो, therefore x is equal to 200 liters। आंसर सेम आया, ओके, बिकॉज दिस इज द सेम मेथड, वी आर यूजिंग बेसिकली यूनिटरी मेथड ओनली, आप आल्सो। तो therefore the volume of the fish tank is 200 liters। ये हो गया, ये क्वेश्चन समझा सबको। once you're done copying it and you understood, मेरे को yes message करो, okay, so I'll understand that you got it। Yes, sir. okay, चलो good। Yes. हाँ ठीक है, got it got it। I'm waiting for everyone else also, so ठीक है चलो। okay, yeah, एक minute। ओके, सो अप टिल नाउ हम लोग ने ये जो फॉर्मूला डिस्कस किया, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड, और ये जो बेसिक कन्वर्जन्स थे, 1 मिलीलीटर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड ये जो इंपॉर्टेंट था, देखो मैंने जो स्टार भी मार्क किया, एंड इट केम इन दिस क्वेश्चन, इसका काम, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स फॉर नाउ, एंड नाउ लेट्स गो अहेड, ओके, with more questions in this chapter। till then just ये एक बार कॉपी कर लो अगर नहीं किया। ओके okay, yeah, let's continue now। so just a minute, yeah। so हाँ ठीक है, let's now I'll give you all one more question, तो इसको भी कर लो। okay, ये कॉपी करो फिर क्वेश्चन, ये कॉपी कर लो, फिर I'll explain also how to do it। तो बट पहले हाँ, तो length and the length, breadth and height
of a cuboidal warehouse is 6 meter, 4 meter, and 4 meters respectively. ठीक है? So the length, breadth and height of this एक cuboidal warehouse है जिसका length, breadth and height दिया है. Okay, now अभी देखो क्या पूछा है. How many cube shaped boxes of side 40 centimeter will fill the warehouse completely. ठीक है? So अभी question लिख लो and then I'll explain also. So the length, breadth and height of a cuboidal warehouse is 6 meter, 4 meter and 4 meter respectively. Okay. How many cube-shaped boxes of side 40 centimeter will fill the warehouse completely? तो पहले तो ये क्यूब शेप दिया है तो सिर्फ एक ही साइड का मेजरमेंट देना पड़ता है. व्हाई? बिकॉज यू नो क्यूब ऑल साइड्स आर इक्वल. तो उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट का कुछ ऐसे चक्कर होता ही नहीं है. ठीक है? लेंथ ब्रेथ हाइट सब एक ही होता है. सो व्हाट दिस क्वेश्चन मींस इज कि एक बड़ा सा एक ऐसे वेयर हाउस है. ठीक है? ओके. एंड क्या हो रहा है उस वेयर हाउस में? दीज आर द मेजरमेंट्स गिवन. तो अभी हम लोग को ये बड़े वेयर हाउस में ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स निकालने ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर. तो ऐसे टोटली कितने क्यूब्स निकलेंगे दैट द होल वेयर हाउस का थिंग गेट्स कवर्ड अप. ओके. तो अभी ना हाउ डू वी डू दिस, दैट आल्सो आई एक्सप्लेन. तो टू एक्सप्लेन दिस इन सिंपलर टर्म्स ऐसे भी देख सकते हैं कि इफ देयर इज अ बिग वॉल. ओके. एक बड़ा सा वॉल है और ऐसा वॉल है and we need to make it by using small bricks. तो ऐसे एक brick, दूसरा brick, third brick, fourth brick, you know, keep putting bricks. So the question is basically how many totally bricks will be needed. मतलब या तो यहाँ पे जो दिया है कि एक बड़ा सा इसको निकाल रहे हैं तो how many cubes can be formed, या तो how many ऐसे bricks. देखो if you just do this, 1 second. ठीक है? तो ऐसे 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 तो कितने ब्रिक्स फॉर्म होंगे टोटली. ओके. सो क्वेश्चन अभी सब लोग को समझ में आया एटलीस्ट कि व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन? एक बार वापस पढ़ो. हाउ मेनी क्यूब शेप्ड बॉक्सेस विल फिल द वेयरहाउस कंप्लीटली. ऐसे छोटे छोटे कितने बॉक्सेस डालेंगे दैट द होल वेयरहाउस गेट्स फिल्ड. सो नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. ओके. सो ओके आंसर. तो इसका फॉर्मूला है. ओके. देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो राइट दिस डाउन. ओके. नंबर ऑफ boxes is equal to volume of वेयर हाउस. टोटल जो वेयर हाउस, जो बड़ा सा वेयर हाउस है उसका वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स. दिस इज द एंटायर फॉर्मूला. ओके. and now let's see, so we need to first find volume of the warehouse. तो volume of warehouse क्या है पहले वो ढूंढते हैं. so इसके लिए लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट चाहिए. so क्या दिया है? 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर. तो ये 6 मीटर है, दिस इज 4 मीटर्स एंड दिस इज 4 मीटर्स. एंड वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स कितना है? दैट इज व्हाट, दैट इज अ, ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है. ओके. सो इसका साइड और द लेंथ इज गिवन 40 सेंटीमीटर. तो पहले तो यूनिट, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है. सो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर. So 1 meter is 100 centimeters. So 6 meters is 600 centimeters. This is 400 centimeters and this is also 400 centimeters. Okay. So now everything is also in the same unit क्योंकि otherwise how will you do it? ऐसे नहीं कर सकते ना कि एक को मीटर में रखेंगे दूसरे को सेंटीमीटर में, तो ऐसे नहीं चलेगा. So now let's put this in the formula. So
वॉल्यूम ऑफ अ वेयर हाउस टोटली वॉल्यूम कितना हो गया, L इंटू बी इंटू एच, विच इज 600 इंटू 400 इंटू 400, एंड इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब, विच इज 40 इंटू 40 इंटू 40. नाउ आई वोंट मल्टीप्लाई दिस, मैं इसको एज इट इज ऐसे ही रखूंगा, एंड दिस को एज इट इज ऐसे. व्हाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट डिवाइडेड, तो कैंसलेशन में इजी हो जाएगा. सो देयरफॉर क्या है, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस, देख लो. सो राइट दिस, सो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस is what volume of the warehouse, which is how much, 600 into 400 into 400 upon the volume of one box, which is 40 into 40 into 40, है ना. तो ये अभी हम लोग को कैंसिल करके आंसर निकालना है from this, and this equation is also given to us over here. So अभी now how do we cancel this, let's see. तो पहले तो zero cut, zero cut, zero cut, again zero cut, now zero here and a zero here. तो ये देखो अभी क्या बचा, so what is left is 600 into 40 into 4 upon 4 into 4 into 4, correct? So now 4 ones are 4, 4 ones are, so 4 cut. Now 4 ones are 4, 4 tens are 40. So now let's see what's left. So 600 into 10 upon 4. देखो ये 4 बचा है अब तक. So now if we just cut this, okay, very good. So many people have started sending the answers abhi. तो क्या हो गया, तो 4 ones are 4, 4 150s are, so this is 150 into 10, which is equal to 1500 boxes. That is the final answer. देखो तो totally 1500 boxes निकलेंगे वो बड़े warehouse से. If we use this formula, then we obtain ऐसे 1500 boxes. तो क्वेश्चन भी तुम लोग को समझाना कि एक बड़ा warehouse है, उनमें से उसका dimensions are given, तो उससे you have to remove small small boxes. तो how many boxes will it take for the whole warehouse to ऐसे get covered, ठीक है. तो इसका आंसर we just solved it, came out to be 1500 boxes. Okay, so copy this, whoever is watching the video, ये pause करके copy कर लो, and इसके साथ then हो गया. Okay, आज के लिए that's all for today's class. You can just copy this now, and this formula is important. ये number of boxes के लिए specifically नहीं है, ये number of anything, bricks हो सकता है अगर wall है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो it can be for anything. So number of boxes or bricks or whatever is equal to volume of the warehouse. मतलब जो बड़ा volume है वो total upon छोटे छोटे का एक एक, तो वो जो बड़ा and then छोटे छोटे का एक एक करके. Okay, so yeah, with this you can find the number of boxes, and we did that, and that's all for today's class. Okay, so thank you for watching and see you next time.